all of you had witnessed recently. Such illegal and irresponsible Indian conduct has all the potential to trigger a humanitarian crisis in Pakistan. The ongoing water manipulation by India gravely contravenes international human rights and international humanitarian law while hindering progress on sustainable development goals on poverty and hunger. If India is allowed to violate treaty and obligations of India under the treaty with impunity, we are setting a very dangerous precedent. Alarmingly, India is now subverting the treaty's own dispute resolution mechanism by refusing to participate in the Court of Arbitration and Neutral Expert proceedings. India is pursuing a deliberate strategy to sabotage the well-established arbitration process under the treaty provisions. Pakistan would like to reiterate that Indus Water Treaty is a binding legal instrument that has made an invaluable contribution to peace and stability of South Asia. Its violation, on the one hand, threatens the inviolability of international treaties, and on the other, it poses serious threats to regional peace and security, principles of good neighborhood, and norms that govern interstate relations. Excellencies, ladies and gentlemen, the Permanent Court of Arbitration, in its recent decision of June and August 2025, reaffirmed the continuing validity of the Indus Water Treaty and its binding dispute resolution mechanisms. These rulings leave no ambiguity. The Indus Water Treaty is alive and its provisions remain binding on the parties. Indian impunity must not be accepted by the international community to which you all represent. We also take note in this regard the communication by several UN special procedures and mandate holders addressed to India, in which serious legal, human rights and humanitarian concerns have been expressed regarding Indian illegal actions pertaining to Indus Water Treaty. The communication has been made public on 15th of December. On 21st of June, I'm quoting now excerpts from the communication which has been made public on 15th of December. On 21st of June 2025, India's Home Minister declared that India would never restore the treaty and would instead divert waters to India's Rajasthan via a new canal. Number two, in the same report, Pakistan National Security Committee has declared that any attempt to stop or divert the flow of water to Pakistan under the treaty will be considered as an act of war. This was on 24th of April this year. Now I'm quoting again from the report, quote, "We are concerned that India's response to the Pahalgam attack appears to, number one, have violated the rights to life and security of persons as a result of the unlawful use of force on Pakistan's territory, and two, risk violating the rights to work and livelihood and adequate standard of living, including the rights to water and food, and a clean, healthy, and sustainable environment and development as a result of the actions that may be taken to disrupt the flow of water to Pakistan under the Indus Water Treaty." On the abeyance of the Indus Water Treaty, the report says, I quote again, "We are deeply concerned that any disruption of the flow of water to Pakistan that may result from holding the Indus Water Treaties in abeyance could severely affect the human rights of millions of people in Pakistan who rely on the river for agriculture, industry, drinking water and sanitation, and healthy ecosystems by undermining their rights to work and livelihood, water, food, and adequate standard of living, a clean and healthy environment, economic self-determination of peoples, and the right to development," unquote. Excellencies, ladies and gentlemen, the international community must take notice of India's
continued disregard of a bilateral treaty and counsel India to act responsibly in accordance with international law and established norms. Belligerent statements keep coming from the Indian leadership clearly demonstrate Indian intentions and designs to weaponize water aimed at inflicting harm on Pakistan and its people. We have repeatedly brought this situation to the attention of the UN Security Council, most recently in my letters to the UN Security Council's President on 11th of December 2025. I have similarly written to the UN Secretary General as well as UN President of the General Assembly to play their due role in this regard. Let me reassure you that Pakistan remains committed to peaceful resolution of disputes and issues with India, but will not compromise on the existential water rights of its people. Excellencies, ladies and gentlemen, we urge the international community, especially the UN Security Council members, to take immediate steps to address this situation. We hope that in your national capacities and capabilities, you will call on India for the immediate restoration of the Indus Water Treaty in full, stop weaponization of water, uphold international law and treaty obligations, and refrain from undermining peace and stability of South Asia. I will conclude by saying water is life and cannot be weaponized. I thank you all for joining us this evening. नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इशाक़ डार की भारतीय आबी जारहियत पर गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग। उन्होंने कहा कि भारतीय इक़दाम से जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को संगीन ख़तरात लाहिक हैं। भारत ने अप्रैल 2025 में सिंतोस मुआहिदा यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल किया। उन्होंने कहा कि भारतीय इक़दाम आलमी कानून और वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी है। इशाक़ डार ने कहा कि दरियाए चनाब के बहाव में रवा साल 2 मरतबा गैर मामूली तब्दीलियाँ रिकॉर्ड की गईं। 30 अप्रैल तक 21 मई और 7 तक 15 दिसंबर 2025 पानी के बहाव में शदीद उतार चढ़ाव आया। भारत ने पेशगी इत्तला के बगैर दरियाए चनाब में पानी छोड़ा। मुआहदे के तहत ज़रूरी डेटा और मालूमात पाकिस्तान को फराहम नहीं की गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए बाज़ाबता सिफारती और कानूनी रास्ता इख्तियार किया। इशाक़ डार का कहना था कि भारत का हालिया इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। भारतीय इक़दाम से पाकिस्तान की ग़िज़ाई सलामती को ख़तरा लाहिक है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत सिंतोस मुआहदे के मुताबिक ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। भारत मुआहदे को मुनज़्ज़म अंदाज में कमज़ोर करने की कोशिशें कर रहा है। किशन गंगा और रतले जैसे मनसूबे मुआहदे की तकनीकी शराइत की खिलाफ वर्जी हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत गैर कानूनी डैमों की तामीर जारी रखे हुए है। डैमों की तामीर से भारत की पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत और उसका गैर कानूनी इस्तेमाल उसमें इजाफा हो रहा है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की सलामती, मईशत और लोगों की ज़िंदगियों के लिए ख़तरा हैं। भारत ने हाइड्रोलॉजिकल डेटा और मुश्तरका निगरानी का अमल रोक रखा है। इशाक़ डार ने कहा कि भारतीय इक़दाम पर पाकिस्तान को सैलाब और खुशहाली के ख़तरात से दो चार होना पड़ा। भारतीय आबी इक़दाम इंसानी बहरान को जन्म देने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि सिंतोस मुआहिदा जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम का अहम ज़रिया है। भारत की जानिब से तनाज़ात के हल से फ़रार आलमी कवानीन की नफ़ी है। उनका कहना था कि जून और अगस्त 2025 में सालिसी अदालत ने सिंतोस मुआहिदे की हैसियत बरकरार दी थी। सिंतोस मुआहिदा नाफिजुल अमल और फरीकैन पर इसकी पासदारी लाजिम है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी तरीक़ाकार ने भारतीय इक़दामात पर तशवीश ज़ाहिर की। भारतीय वज़ीर दाखिला ने मुआहिदा बहाल न करने और पानी का रुख मोड़ने का ऐलान किया। पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि पानी रोकना या इसका रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। पाकिस्तान ने यह मामला बारहा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में उठाया है। पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा है और तनाज़ात के पुरअमन हल का हमेशा से हामी रहा है। यह हम आपको बता रहे हैं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इशाक़ डार ने भारतीय आबी जारहियत पर गैर मुल्की सफ़ीरों को आज ब्रीफिंग दी है और उन्होंने बड़े वाशगाफ़ अल्फाज में कह दिया है कि जो भारतीय इक़दाम हैं इससे जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को संगीन ख़तरात लाहिक हैं। भारत ने अप्रैल 2025 में सिंतोस मुआहिदा यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल किया था। भारत अपनी हरथर्मियों से बाज नहीं आ रहा और इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। उनका ये कहना था कि भारतीय इक़दाम आलमी कानून और वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी है।
दरियाए चनाब के बहाव में रवां साल 2 मरतबा गैर मामूली तब्दीलियां रिकॉर्ड की गई। 30 अप्रैल तक 21 मई और 7 तक 15 दिसंबर 2025 पानी के बहाव में शदीद उतार चढ़ाव आया। उनका कहना था कि भारत ने पेशगी इत्तला के बगैर दरियाए चनाब में पानी छोड़ा। मुआहदे के तहत ज़रूरी डेटा और मालूमात पाकिस्तान को फराहम नहीं की गई। पाकिस्तान ने इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए बाज़ाबता सिफारती और कानूनी रास्ता इख्तियार किया। भारत का हाल इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। भारत से तौस मुआहदे के मुताबिक जिम्मेदारियां पूरी करे। भारत मुआहदे को